Good morning, my dear students. Am I audible and visible to you all? Who all are here? गुड मॉर्निंग हंसिका प्रेरणा तीर्थराज कैसे हो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ bonding and molecular structure, and this is an important topic because bonding is the most important chapter of chemistry. Clear? Perfect. So let's see how many students are there. 3, 4, 5. Welcome everybody. Poonam Singh, welcome. So let's begin. So here we have the Elixir dropper batch, which is going to start from 16th of August. Elixir dropper batch has in-depth analysis, revision classes, mentor-mentee program. You can use the code AV Live and you can go in for the store. Store में जाकर आप इस सबको कर सकते हो. Elixir dropper batch for NEET UG 2024. Okay. Use the code AV Live and join with us. And if you have any problems, 6366950726 is the WhatsApp number. That's me. And here we start over with the chemical bonding and molecular structure. A little bit different way. Hopefully you would like it. Okay. Chaliye. So let's begin over with the chapter. Now, as we have already been doing it, आप ये फटाफट पढ़ते चले जाइएगा और मुझे बताते चले जाइएगा कि आपको क्या डाउट आ रहा है, क्या कंफ्यूजन आ रहा है. ठीक है? So here it is. हमारे पास है Causal-Lewis approach. We are going to talk about that. We have already talked about it. ठीक है? अब देखो एक बात का ध्यान रखना. This is what we have as the Causal-Lewis approach. ठीक है? Good morning पूनम. Good morning खुशबू. जीते रहो बेटा. ओके. तो यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं Causal-Lewis अप्रोच की, तो बस एक बात का ध्यान रखना कि दिस Causal-Lewis अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, इट इज ये हमें बताता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बनते हैं. Causal-Lewis अप्रोच इज समथिंग अबाउट द ऑक्टेट रूल. ये है ऑक्टेट रूल कि ऑक्टेट क्या होता है और कैसे वर्क करता है. So that is what we are going to talk about, the octet rule in Causal-Lewis approach. लेकिन ये octet rule में एक बात मैंने तो आपको बताई है कि octet rule is valid only for a few elements. But the important thing is कि जिस element के लिए valid है, that is carbon. And carbon forms 75% of the total compounds. And since carbon is forming 75% of the total compounds, that is why something which is valid for carbon becomes extremely important. And that is how the Lewis theory or octet rule or Causal-Lewis approach, they become valid and they become still applicable. Is it clear? We have talked about the Lewis dot structures in a very, very great detail. I hope that is not a problem with you. Lewis dot structure समझ में आ गए हैं? यहां तक जो आप पढ़ रहे हो इसमें कुछ पूछना है आप में से किसी ने भी? Anyone? Anything you want to ask here? So that's what we have talked about, the formation of sodium ion, sodium chloride. This is the formation of calcium fluoride. आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते चले जा रहे हो ना. एनसीईआरटी की बुक आपने खोल रखी है अपने सामने.
ये देखो ना, atoms can combine either by transfer of valence electron from one atom to another, gaining or losing, or by sharing a valence electron in order to have an octet in their valence shell. This is known as the octet rule. कोई confusion? This is what we have as the octet rule. Octet rule गलत है, please understand that. इसके अंदर बहुत सारे exceptions हैं, but we are not actually bothered with it. ठीक है? लैंगमर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, so just don't go along with it. एनसीईआरटी ये नीट के एग्जामिनेशन में साइंटिस्ट के नाम आज तक कभी नहीं पूछे गए हैं एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड. क्लियर? We have already done Lewis dot theory in very detail. All the structures we have understood thoroughly. So stick to that. ठीक है? Yes, Ankan. Only carbon and fluorine show octet rule without any exception. So octet rule itself becomes an exception rather than exceptions to the octet rule. ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना. For anions, the addition of each negative charge would mean addition of one electron. For cations, each positive charge would be result in the subtraction of one electron from the total number of valence electrons. Is that clear? हाँ अंकल, मैंने ही बताया था, and that is what is true. Now, this statement does not have an exception. This is not a generalization. This is an observation. Okay? देखो एक बात का ध्यान रखना. Knowing the chemical symbol of the combining atoms and having knowledge of the skeletal structure of the compound known or guessed intelligently. Okay, so please understand that if a molecule is given to you, something like we have talked about something called N2O, nitrous oxide. When you talk about N2O, nitrous oxide, then in that case, it is really important to understand that this is NNO. It is not NON. Normal guessing would say it is NON, but actually it is NNO. So that is what we need to understand it thoroughly. Okay. Here we talk about the octet of electrons for each of these. I hope you remember all the way how to form the Lewis dot structure. देखो Lewis dot structure के अंदर एनसीईआरटी ने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम दिया है. ठीक है. We have talked about the formal charge. Anything you have to ask in formal charge? What exactly is formal charge and how do we calculate it? यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 of the shared electrons. I said it is the number of bonds. Please remember, number of bonds is equal to 1/2 of the shared electrons. Is this clear? और एक बात का ध्यान रखना, formal charge do not indicate the real charge separation within the molecule. Indicating the charges on the atom on the Lewis structure only helps in keeping track of the valence electron in the molecule. So formal charge is the theoretical charge. Okay, it is not the actual charge. It is not the actual charge separation. जब हम dipole moment की बात करते हैं, then in that case we get the actual charge separation. And as you can very well see, there are so many limitations of octet rule.
Okay, and there are certain odd electron molecules as well, like NO2, NO. Okay. So why the less electronegative atom occupies the central position? Who said the less electronegative atom occupies the central position? NH3, more electronegative atom occupies the central position. H2O, more electronegative occupies the central position. pH3, in fact, all the hydrogen compounds, more electronegative atom occupies the central position. अगेन फिर आप वो एक रूल बना रहे हो फिर कहोगे एक्सेप्शन. अंकन, पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर more electronegative, that is carbon, is occupying the central position, and hydrogen, which is less electronegative, is occupying the peripheral position. It's not about the electronegativity, it's about the valency. किसकी वैलेंसी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की? और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, one thing I have already told you, that more electronegative will never expand the valency. And whenever we talk about the expansion of the valency, it would be the less electronegative element. And that is why less electronegative element happens to be for occupying the central position, क्योंकि उसके साथ उसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाती है. ठीक है. Carbon less electronegative हो चाहे more electronegative हो, that is going to occupy the central position. Phosphorus, more electronegative or less electronegative, will occupy the central position. Sulfur, तो इसलिए तुक्का मत मारो. ठीक है. अगर आपको किसी ने ये रूल दे रखा है कि भाई स्ट्रक्चर बनाते हुए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बीच में डाल दो तो फंस जाओगे. समझे? ये कहीं एनसीईआरटी ने लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विल ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन. ओके. और अगर आप ये कहोगे कि जब हाइड्रोजन अटैच हो तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा, आपकी मर्जी. कहां लिखा हुआ है इनका एनसीईआरटी में? बताओगे थोड़ा सा? अंकन एक बार एनसीईआरटी पढ़ के बताओ तो कौन से पॉइंट पर है, जहां पे मैं हूं उससे पहले या उसके बाद में? लेट मी ऑल्सो चेक इट आउट एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में लिखा हो तो मुझे तो मानना पड़ेगा ना फिर. बताओ, चाहे मेरे पास कितने भी एक्सेप्शन हो, कितने भी एक्सप्लेनेशन हो. पॉइंट नंबर 4 ऑफ लुइस डॉट स्ट्रक्चर. तो बेटा लुइस डॉट स्ट्रक्चर अपने आप में गलत है, वो तो लुइस ने जो बोला था वो बताया गया ना. इन जनरल, ये वर्ड दिख रहा है आपको? इन जनरल. तो जब इन जनरल वर्ड सामने लिख गया तो फिर इसमें कोई डिबेट करने वाली बात ही नहीं. आपने तो इन जनरल को रूल बना दिया. और वो मैंने आपको बता दिया कि मोर इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एबल टू एक्सपैंड इट्स वैलेंसी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सपैंड नहीं करता. ठीक है. अब यहां पर इन्होंने NF3 का एग्जाम्पल तो दे दिया, NH3 का क्यों नहीं दिया भाई? अब ये NH4 का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया भाई उन्होंने? CH4 का भी एग्जाम्पल दे देते. दे सेड इन जनरल. ओके. और इन जनरल का रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट most often or less electronegative element most often has a higher valency. Okay.
व्हाई डिड यू गेट कंफ्यूज जब इन जनरल वर्ड लिखा हुआ है तो? और ये लुइस डॉट थ्योरी है, लुइस डॉट थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे दे ही दिए ना उन्होंने, फिर इसका भी ड्रॉबैक दे देंगे। ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट द एक्सपैंडेड ऑक्टेट इज। Expanded octet is always of the less electronegative atom. More electronegative element जो भी होगा वो अपना एक octet expand नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखो यहां पे भी इंटरेस्टिंगली लिख दिया। ओके, अब देखो अदर ड्रॉबैक्स, ग्लोबल नोबल गैस के रिएक्शन को बता दिया। I simply fail to understand that if something has something good in it, why don't you simply tell the good thing about it and leave the rest? सही चीज बताओ, अच्छी चीज बताओ और बाकियों को छोड़ो। ठीक है ना? Simply say that octet rule is always obeyed by carbon and fluorine. So whenever you have carbon and whenever you have fluorine, you can be sure that octet rule will be obeyed. For everything else, you have to check it out. खत्म, टेंशन ही नहीं लेनी, ज्यादा एम्फोसिस नहीं देना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ढंग से हो ही जाएगी, आगे क्या प्रॉब्लम है? Okay. Now here we have the ionic compounds also, and here we have the sodium chloride structure. ठीक है ना? जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो। एंड हियर इज द लेटेंट एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन ढंग से समझ लो जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, किसी और किताब में कोई और डेफिनेशन हो सकती है, मॉड्यूल में कुछ और डेफिनेशन हो सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन इन एनसीईआरटी। द लैटिस एंथैल्पी बाय डेफिनेशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड, बट बी वेरी क्लियर दिस कुड बी ऑफ द नॉन आयनिक सॉलिड आल्सो, as the energy required, that is the most important thing, to completely separate 1 mole of the solid ionic compound into gaseous constituent ions. ठीक है, so that is what we have as lattice enthalpy. बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं lattice enthalpy क्या होती है। फॉर एग्जांपल द lattice enthalpy of sodium chloride is this much energy is required to separate 1 mole of sodium is equal to 1 mole of sodium ion. It is to the infinite distance. So that is what we have as the lattice energy. ठीक है, now, when we talk about the bond parameters, what are the bond parameters? We have the bond length as a bond parameter, we have the bond strength and the bond angle. These are the bond parameters, but I believe most important are the bond length and bond angles. ये आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, bond strength तो नहीं पूछी जाती। ठीक है, हाँ, comparison of bond strength पूछा जा सकता है। bond order is directly proportional to bond strength, और rather bond strength is directly proportional to bond order. जितना ज्यादा bond order होता चला जाएगा उतनी ज्यादा bond strength भी होती चली जाएगी। यहां पर जो टिपिकल एवरेज बॉन्ड लेंथ है ये याद नहीं करनी है। ठीक है, here it is bond angle and the bond energy, that is bond enthalpy which is said to be। किसी को इनमें से कुछ पूछना है? ये टेबल याद नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ दूसरा टेबल भी याद नहीं करना, तीसरा टेबल भी याद नहीं करना। ये टेबल्स याद नहीं करने हैं। ठीक है, हाँ, एक आइडिया हो जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, यहां पे टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है।
ठीक है। बेटा प्रोपोर्शनल वर्ड तीसरा लगाना थोड़ा गलत हो जाता है। ऐसा नहीं हो जाता कि बॉन्ड ऑर्डर अगर डबल हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ हाफ हो जाती है। इट इज नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल नहीं, डिपेंडेंट कर लो। डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके। वेलकम दुर्गा प्रसाद। आई एम परफेक्टली फाइन। यू आर नॉट वेल। हाउ आर यू? आर यू वेल नाउ? As you can very well see that here it is 148 and 121. The bond order has become from 1 to 2, but the bond length has not actually become half. So please don't use the word proportional. Otherwise, you are going to get confused yourself. Is this clear? We have also talked about the canonical structure. We have talked about what resonance is and how we can give the resonating structures using the Lewis theory. Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. This part you have to remember because this part is going to be responsible for a question. पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी बात पे बन जाएगा. Is this clear? And here comes the polarity of the bonds, the dipole moments. पढ़ते जा रहे हो ना?
We have already talked about the bond length. We have talked about the dipole moment. Anything you would like to ask here? We have already talked about the conversion factor. ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था. ठीक है? Yesterday morning class we did what these structures are. Okay? Anything problem? I believe it's much more clearer. Now, this is a very important example, NF3 and NH3. We discussed it in the class. Any confusions, anybody? So this is the very important thing here. ये आपको डापुल मोमेंट्स याद नहीं करने, बट यू नीड टू नो विच ऑफ देम आर पोलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन पोलर. तो डापुल मोमेंट्स एग्जैक्टली आपको याद नहीं करने, लेकिन आपको पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, ये आपको याद रखना है. सो आर वी रीडिंग इट?
हंसिका, मैंने अभी अभी बोला है कि इनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट याद रखना जरूरी नहीं है, डायपोल मोमेंट वैल्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। अबीर समंता कह रहे हैं सर आप बोर्ड वर्क करके पढ़ाएं। अबीर समंता, हाउ मेनी क्लासेस हैव यू अटेंडेड एज येट? हाउ मेनी क्लासेस हैव यू अटेंडेड एज येट फॉर मी? प्लीज टेल मी दैट। देयर आर सो मेनी टीचर्स हु डू द वर्क ऑन बोर्ड, है ना, बहुत सारे हैं ना बेटा। जिसका अच्छा लगता है आप पढ़ो। आई विल टीच ऑन द बोर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड दिस इज एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी बोर्ड पर नहीं होती। ओके। ओके, now please understand one thing, that even if you don't have to use the postulates that are written in NCERT, you have to know them. एनसीईआरटी में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो यूज करने के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है कि उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। सो द क्वेश्चन कुड बी सिंपली, what are the main postulates of VSEPR, or which of them is not the postulate of VSEPR? And there you have to stick to the NCERT, what NCERT says. सही या गलत doesn't make a difference. Okay, and remember we are aiming for 180 on 180. प्लीज मेरा साथ दो, और इनफैक्ट अपना साथ दो, और जो कह रहा हूं वो कर लो। इज इट ओके? इज इट क्लियर? ये रीड करते जा रहे हो आप? क्या इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपको जरूर करना है। ठीक है? दिस अनदर टेबल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, extremely important table, you have to do it.
ओके, ये सारे के सारे ये जो टेबल्स हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है. दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सारा का सारा आपने पढ़ना है और याद भी रखना है. देखो बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के अंदर मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में हर चीज आपको याद रखनी है. प्लीज इतना ही कह रहा हूं मैं, उससे ज्यादा आपको ये नहीं कह रहा 10 किताबें याद करनी है, 20 किताबें याद रखनी है. 180 आउट ऑफ 180 आर पॉसिबल एंड विल बी पॉसिबल जस्ट बाय एनसीईआरटी. सो यू हैव टू डू दैट. ओके. एनी काइंड ऑफ डाउट्स हियर? एनसीईआरटी के अंदर ये जो हमारी जो बॉन्डिंग चैप्टर है वो भी हाफिजर्ड है. So, if you have not attended my class, then in that case, I will sincerely suggest you not to read the NCERT before attending the class. Attend the class, do all the three classes. The first class, the three, nahi, char classes hai na. The first class we did the Lewis dot structure. The second class we did valence bond theory. Third class we did hybridization. Fourth we did the molecular orbital theory. And fifth, yes, fifth also, we did the intermolecular forces. If you have not attended those classes, I'll sincerely request you to attend those classes, see those classes, maybe at a faster pace because I have done it quite slowly. Then only read the NCERT, and you will find that you will be able to understand everything written in NCERT. And that is extremely important. Okay? So are you reading through? इस ग्राफ का समझ में आ रहा है आपको? Are you able to understand this graph?
सुमित्रा, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट डीपाई डीपाई बॉन्ड। कौन से एग्जाम्पल में है डीपाई डीपाई बॉन्ड? इतना आसान नहीं है इनको कंपेयर करना, क्योंकि एक ही चीज में ये दोनों मिलेंगे नहीं। ओके। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड। आई हैव टोल्ड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज, since it's using the orbital, so it is going to be formed in the direction of the orbitals. Okay, bond length of H2 is 74 picometers. What do we need to do with it? If it's 74 picometers or 744 picometers, how does it make a difference to us at this moment? आगे का क्वेश्चन भी तो बोलो, आधा क्वेश्चन बोल के छोड़ दिया आपने। Kriti, we are talking about the 11th class bonding chapter. Are you reading through it? Anything you want to ask here? Okay. Are you reading through it? Anything you want to ask anybody?
दिस अगेन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये क्वेश्चन भी आते हैं कहां पे ओवरलैप हो सकता है और कहां पे ओवरलैप नहीं हो सकता। एज वी डिड यस्टरडे आल्सो, वी टॉक्ड अबाउट वेयर द ओवरलैप इज पॉसिबल एंड वेयर द ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। Sumitra, because there is another C double bond O bond, the other oxygen pulls the electrons and decreases the bond length. The electronegativity of atom is not of the atom itself, it is because of the other atoms attached to it. ठीक है ना? समझ आ गई बात? हर मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती। Yes, Prerna, what's the thing in that? When the atoms are far apart at the infinite distance, we consider the atom energy to be zero. When the atoms move towards each other, the energy actually decreases because energy is released out. The system's energy decreases, reaches a minimum, and then again it increases because of the repulsion increasing between the atom. And that's what the graph was. Is this clear? Probability density and wave functions का square is the probability density. Okay. Wave function, whether we talk about the classical wave theory or we talk about this theory, the wave function actually is the amplitude function. It gives the amplitude. So square of the amplitude gives the intensity, and intensity is the probability density. Is this clear? Sumit Roy?
Any confusions with that? Are you reading through it, everybody? कुछ पूछना है तो पूछते चले जाओ. पढ़ते चले जाओ और कुछ पूछना तो पूछते चले जाओ. Read through it. These are the various examples of hybridization. Now we have not done the square planar structure. ठीक है? This we are going to do in the coordination compounds. It's not here. Sigma bond is stronger than the pi bond because sigma bond leads to a better overlap. Large part of the orbitals overlap and electrons, they move between the two nuclei. And between the two nuclei, they are attracted better. And that is why the sigma bond is
stronger as compared to the pi bond. Is this clear? Here's the molecular orbital theory. Anything to ask here? These examples we have already run in yesterday's special class. So if you have not seen that special class, you have to see that special class also. Again, a good one. This diagram. You have to do all the NCERT questions by writing. Okay. So today's session is up to this point only. Two p.m. we have Swati Batra ma'am. 3 p.m. you have Zoology with Sachin Kapur sir. And 4 p.m. you have Chemistry with me again. And today we are going to start with chemical equilibrium again. We are going to restart with chemical equilibrium. So just be there. Join the Telegram channel for YouTube classes and PDFs. AV Live code use करके join कर लो and just download the app. Okay. Unacademy.com/Anoop Vashishtha is my page on Unacademy. Join with me and follow me. Subscribe to NEET Elixir by Unacademy for the best live classes. Like, share and comment. Thank you. मिलते हैं आपसे शाम को 4 बजे. Is that clear? Bye bye.